Hello everyone, welcome to the next video of this solution of your NTA NET December 2022 paper that was held in February and March combined. Although result आ गया है and cut off बहुत high गई है, but still all those who have cleared their exam, congratulations. But all those who were not able to either by 1 marks or by 15 marks, it doesn't matter. What we have to do is now we have to prepare for June, right? The exam that is going to be held in June. So I'll suggest everyone to start preparing from now. You all know that what all mistakes you have made in your previous paper and what all scope is there for you to prepare for your next exam. So learn from your mistakes and try to rectify them in this current in the upcoming exam. Okay, so notification already aa chuki hai June exam ki, and I guess by the end of April or May first week or second week of May, most probably you will be getting your application form available on the internet. So we have to prepare accordingly. So first what we will be doing is, as in previous videos also I have told, कि we have to prepare what? We have to prepare the PYQs of GATE. ठीक है, most importantly PYQs of GATE and PYQs of NET. So what we will be doing is, I have already covered 2015 NET exam, 2016 exam I have covered, 2000 I guess 18, 19, 2021, all these papers I have already covered on YouTube only. So I'll suggest everyone ki please go through these videos if you haven't watched these videos till now. Okay, and related to GATE, very soon I'll be after finishing this 2022 December 2022 session. Okay, after completing this paper we'll be starting with this GATE 2023 paper. Okay, and then we'll be covering 2022 and so on your YouTube only. And if you have any other doubt or if you have any other query or any other thing, please feel free to call or mail us at admin@gatelectures.com, or you can also call 9821876104 or 9821876102. This is the Android app. You can visit this Android app as well. ठीक है, इसको install कर लो and then you can have access on your phone for the website. ठीक है, in place of website you can download this app as well. Currently, there's a very amazing offer that is going on regarding UGC NET Computer Science. So if you want to enroll for the course, you can just install our Android app. So you can install from the Google Play Store. So if you can see the home page, so you can see that there are so many courses that you are going on. So just click on the button which is store, and you can see that we have so many different courses that are currently going on. And that's if you want to enroll for UGC NET Computer Science, so that you can see that the test series for UGC NET Computer Science is only 400 rupees. And if you want to enroll for UGC NET Computer Science, so you can see there's a very amazing offer that is going on. So in 3-month course, the fees is only 4,999 only. And then you can see if you want to go for 6 months course, so that fees is only 5,999. And for 1 year course, the fees is only 7,999. So this is a very amazing offer, and just enroll this course as soon as possible, because this offer is only valid till 30th of April. After this, the fees will hike. So please enroll as soon as possible. So in the previous video, as you know, we were discussing the questions, and just let me open the PDF. Yeah, and we have discussed these questions. If you see, ये सारे questions हम discuss कर चुके हैं, and I hope कि इनमें किसी में भी you are not having any problem. And in case if you feel there is any problem, you can write us on the email. मतलब राइट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ये टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे भी आप फिजिबल हो. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो आपको प्रॉब्लमैटिक लग रहा हो या जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो. बट अगेन आई रिपीट, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू फील इज प्रॉब्लमैटिक और इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम और एनी कंसेप्ट दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, फील फ्री टू राइट. सो ये सब हम कर चुके हैं. क्वेश्चन 19 हमने कर लिया था. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है. For the following set of process scheduled using FCFS policy, कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं यहाँ पे? FCFS पॉलिसी को यूज करना है. ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. हाँ,
ओके, FCFS पॉलिसी सिंपल पॉलिसी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आई होप यू ऑल नो उसकी फुल फॉर्म। So the process that will come first will be given the CPU for execution, right? So this is the first come first serve policy. ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेसिकली। सो डिटरमाइन द एवरेज वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम आपको बोल रहे हैं, एंड सपोज दैट द प्रोसेस अराइव्ड इन ऑर्डर P1 P2 P3 P4। अराइवल टाइम मेंशन नहीं है, बट सिंपली क्या बोल रहे हैं वो कि दिस इज द ऑर्डर इन विच दे माइट हैव अराइव्ड। ठीक है, अब अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अज्यूम द अराइवल टाइम टू बी 0, बिकॉज हमें ऑर्डर मेंशन किया हुआ है बट अराइवल टाइम नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका हमने 0 मान लिया, इसका हम 1 मान लें, बिकॉज हो सकता है कि ये प्रोसेस 2 पे आया हो, ये प्रोसेस 4 पे आया हो, ये प्रोसेस 8 पे आया हो। दिस इज ऑल एन अजम्पशन। सो व्हाट वी विल से, वी विल अज्यूम दैट अराइवल टाइम इज 0, बट नो मिली सेकेंड्स का फर्क जो होता है, मे बी 0.1 मिली सेकेंड P1 आया हो, 0.2 मिली सेकेंड पे P2 आया हो, ऐसे करके वी आर अज्यूमिंग कि this might have been the arrival time. So what we will do, we will make the chart. ठीक है, सबसे पहले P1 has arrived, so we'll start with at time 0 P1 arrived. ठीक है, what is the burst time of P1? 8. So P1 will execute for 8 milliseconds. Done. Then which process came? Then P2 came. So P2 will execute for 15 milliseconds. That is 8 and 15 will give you 23. Then P3 came for 10. That is 23 and 10 will give you 33. And then last में P4 came and the time is 7, that is 40. So total time कितना लग रहा है? 40. So now what we will do, now we will make the table. So we have process number, arrival time हमने assume कर लिया है 0 सबका, burst time हमें given है, and then we'll find the completion time from this chart, from this table. Gantt chart इसको बोलते हैं, I hope you all know. ठीक है, एंड देन वहाँ से वी कैन कंप्यूट दी वेटिंग टाइम। सो व्हाट इज द प्रोसेस नंबर हमारा है P1 P2 P3 एंड P4. So what is the arrival time? We'll assume arrival time to be 0 because 0.11 के गैप हो सकता है, so that is a very small amount. इसका burst time हो गया 8, इसका burst time हो गया 15, इसका burst time हो गया 10, इसका burst time हो गया 7. So what is the completion time now? Completion time of P1 is 8. P2 का completion time is 23. Completion time of P3 is 33 and completion time of P4 is 40. What is waiting time? Waiting time is completion time minus arrival time. So what is this? 8 minus 0 will give you 8. Correct? No, sorry, not this one. This will be this will be burst time, not arrival time, burst time. Sorry. Waiting time is completion time minus burst time. So 8 minus 8 is 0. So process 1 waits for 0 time, and then 23 minus 15 will give you 8, 33 minus 10 will give you 23, and 40 minus 7 will give you 33. ठीक है, when you will add this, what you will get? तो आपने ऐड किया इन सबको, सो क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट इज 64. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? एवरेज वेटिंग टाइम विल बी टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, दैट इज 4, दैट विल गिव यू 60. सो व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम? द एवरेज टाइम इज आंसर नंबर 2, दैट इज 16. ठीक है, now next question is which of the following is not a non-functional requirement? तो इस क्वेश्चन को ऐसा समझो आप, बहुत थोड़ा confusing है. This not will cancel out this not. So this is asking basically which of the following is a functional requirement. So we all know that user interaction is a functional requirement. ठीक है, मतलब whenever you have two negative terms, I hope you all know this, that two negative terms cross out each other. तो यहाँ पे ये not है और यहाँ पे non है. So these two negative terms will cross out each other, and that will give us which of the following is a functional requirement. So portability, security, scalability, ये सारे functional requirements हैं. वो non-functional requirements हैं. These all are non-functional. ठीक है, and this user interaction is a functional environment requirement. So the correct answer is option number 4. Okay, just give me a second. Yeah, so very easy. COCOMO stands for, so I hope you all know that the correct answer is constructive cost model.
ठीक है. So this is your COCOMO. This co is for constructive, this co is for cost, and this is for model. So correct answer is option number 2, constructive cost model. ठीक है. Next question. Okay. So modifying the software to match changes in the ever changing environment. So now if you see, वैसे तो ये वाला question we have discussed a lot of time. This question is from your SE. SE में we have maintenance. ठीक है. वहां पे ये क्वेश्चन आता है. वहां पे वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, अडेप्टिव, करेक्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस पीडीएफ एज वेल रिगार्डिंग रिलेटेड टू मेंटेनेंस. बट स्टिल इफ सम ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और सम ऑफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, if you see the question, what they're saying, modifying the software to match the changes in the ever changing environment. So basically what they're saying is ki this is your environment and you are making change in your model. If this is your model, you are changing your model in such a way that it is adaptable to this particular environment. Right, this is a new environment and this was my old model. So what I did, I made some changes in this old model so that it can adapt to this new environment. So what is the correct answer? Adaptive maintenance. You are adapting some features you are making your model new, or you making certain changes in your old model so that it can be adapted in this new environment. That is your adaptive maintenance. ओके, सो सिंपल सा है ये, तो उसमें कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट. ओके, फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यील्ड्स. ठीक है, वैसे इसका आंसर होता है, वैसे द क्वेश्चन इज की फॉर अ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स अगर हैं, सो योर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस दैट इज BVA विल हैव हाउ मेनी टेस्ट केसेस? 4n+1 जब n वेरिएबल्स हैं. ठीक है, बट यहाँ पे द कंडीशन इज दैट इंस्टेड ऑफ n दे हैव गिवन 2. सो यहाँ पे जो वैसे जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 9, राइट. बट यहाँ पे सिंस ऑल दी आंसर्स आर इन टर्म्स ऑफ n ओनली, तो अगर फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कितने केस लगते हैं? 4n+1 वेयर n यहाँ पे 2 हो जाता. But the formula will be 4n+1. So this is not a wrong question because BVA जो है वो 4n+1 टेस्ट केसेस यूज करता है. अब n की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 मेंशन है, तो उन्होंने 9 वैल्यू नहीं दिया. बेसिकली आस्किंग दी फॉर्मूला कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या फॉर्मूला यूज होता है. ठीक है, अगर एक आता है रोबस्टनेस करके, रोबस्टनेस टेस्टिंग होती है, उसमें आपके 6n+1 टेस्ट केसेस होते हैं. ठीक है, सो BVA में वी हैव 4n+1 टेस्ट केसेस. ओके, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रीज आर पॉसिबल विद n नोड. तो दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, इसको ड्रॉप किया है. आई होप यू ऑल हैव सीन दिस. तो दिस क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड. ठीक है, सो आई सी टू इट कि इसमें क्या गलत है, क्या है. मैंने चेक नहीं किया है वाला क्वेश्चन अभी कि ये ड्रॉप क्या वजह है. आई थिंक बिकॉज ऑफ दी दिस व्हाट यू से ऑप्शंस में भी द क्वेश्चन इज रॉन्ग, राइट. ऑब्वियसली ऑप्शन की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग है, कुछ मिसप्रिंट है ऑप्शंस में या कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, बट वील सी टू इट लेटर. ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let n denote a positive integer. ठीक है, suppose a function f is defined as f of n is equal to f of n by 2. ये आपका फंक्शन कौन सा है? ये आपका फ्लोर का फंक्शन है. ठीक है, ये आपका नॉर्मल पैरेंथेसिस नहीं है, ये आपका फ्लोर फंक्शन है. फ्लोर ऑन सीलिंग पढ़ा है सबने, वही है. ठीक है, +1. तो n इक्वल टू 1 है तो वैल्यू 0 है, एंड n इज ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू हम ये यूज कर रहे हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f 25? सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली अप्लाई n इज इक्वल टू 25. वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. f, this is your this 25 by 2. So again I only made the mistake. 25 by 2 plus 1. What is this value? This value will be 25 by 2 is, if I divide it over here, it will be 12.5 है ना. And when I am taking floor of 12.5, I will take 12. And if I was about to take seal of 12.5, I would have taken 13. ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना. सो यहाँ पे क्या आ गया? ये दिस विल बी f of what is this? 12. ठीक है, so 12 by 2 plus 1. So here n is equal to 25. Here n is equal to 12. Next we will have 12 by 2 is 6. So f of floor 6 by 2
plus 1. So now what we will do, now we will try to calculate 6 by 2. 6 by 2 तो simple है 3, कोई change नहीं है इसमें. So this will be f of 3 by 2 plus 1. Now what will be 3 by 2? 3 by 2 is 2 times 1, that is this. This will be 1.5. Now what is floor of 1.5? That is 1. And you know that when n is equal to 1, the value is 0. तो यहाँ पे जब आप इसे करोगे, so this will be f of 1 by 2. एंड जैसे ही n इज इक्वल टू 1 हुआ, ये आपका हो जाएगा 0. मतलब यहाँ पे हम +1 नहीं करेंगे. वाई वी विल नॉट डू +1? बिकॉज यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 1 आ गई. तो ये वाला तो मेथड लगा ही नहीं, बिकॉज n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू 12 थी तो हमने ये अप्लाई किया. यहाँ पे n की वैल्यू वॉज 6 तो वी अप्लाइड दिस वन. यहाँ पे n की वैल्यू वॉज 3 सो वी अप्लाइड दिस वन अगेन. ठीक है, बट यहाँ पे एज यू सी ओवर हेयर, आई विल जस्ट चेंज द कलर टू मेक यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू, पहले हम वैल्यू लिखेंगे. यहाँ पे वैल्यू हो गई n इज इक्वल टू 1. जैसे ही वैल्यू हुई n इज इक्वल टू 1, द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 0. यहाँ पे 25 थी इसलिए वी अप्लाइड दिस. या देन वी गॉट द वैल्यू 12 इसलिए वी अप्लाइड दिस. देन वी गॉट वैल्यू 6 इसलिए वी अप्लाइड दिस. देन वी गॉट वैल्यू 3 इसलिए वी अप्लाइड दिस. नाउ वी गॉट वैल्यू n इक्वल टू 1 एंड जैसे n इज इक्वल टू 1 हुआ, वी विल गेट 0. सो दिस मीन्स द रिजल्ट ओवर हेयर इज 0. यहाँ के रिजल्ट आ गया 0. सो 0 प्लस 1, what it will give you? It will give you 1. So this 1 will travel upward. So this will give you 1. 1 plus 1 will give you 2. This 2 will travel upwards. This will be coming 2. 2 plus 1 will give you 3. So this 3 will travel upwards. So 3 plus 1 will give you 4. तो आंसर क्या आ गया आपका 4. And what does this function find? So if you see, this function is basically a log n function. Because we are doing the half, exact half हम कर रहे हैं, that is log n. So correct answer हो गया option number 1, that is 4 is the value of f25 and the function is basically a log n function. ठीक है, I think there is no problem with this question, very easy. The only thing that you have to take is, because कुछ problems हो सकती हैं यहाँ पे कि जब आपका n equal to 1 हुआ, so you must have applied this rule again. But यहाँ पे the clear thing that they have given is they have clearly given the limit कि n when greater than 1 तभी आप अप्लाई करोगे. अगर इक्वल टू 1 है, यू विल गेट 0. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see, for this question, what you should know is, you should know the knowledge of FFT. That is, what is FFT? FFT is fast Fourier transform. Now that is a different concept in all together. ठीक है, so for now I'll not go into this concept. I'll discuss this concept later, because ये concept आपसे पूछा नहीं जाता है, but rarely they have given this, but very basic question they have given. Given the FFT, we can have dash time procedure for multiplying two polynomials. Now we have two polynomials, a of x and b of x. ठीक है, of degree bound n, where input and output represent are in coefficient form, assuming n is the power of 2. So we are saying that n जो है coefficient, तो वो क्या है, power of 2 पे है. So when I will be multiplying two polynomials, normal, अगर हम traditional approach की बात करें, ठीक है, if we talk with respect to traditional approach के point of view से, the time that we will take is order of n square. ठीक है, दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच. बट यहाँ पे वी आर डीलिंग विद फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन वी विल डील, व्हाट वी विल गेट, वी विल रिड्यूस द टाइम एंड इट विल बी ऑर्डर ऑफ n log n. अब इसकी पूरी मैथमेटिक्स है, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट फॉर नाउ. ठीक है, वील कम बैक टू दिस क्वेश्चन लेटर. अभी के लिए जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो, या सॉरी नॉट मैट्रिक्स, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू पॉलिनोमियल्स, द रिजल्ट टर्न्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n square. But when you apply the same method using FFT, that is a mathematical term है ये, तो आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है बाय लॉग, दैट इज n log n जाता है. ठीक है, ओके. सो दिस इज अगेन अ नेक्स्ट नाइस क्वेश्चन. थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है ये. कंसिडर द ग्राफ बिलो, हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज कैन बी फाउंड. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 8, बट कैसे है वील सी. सो इसके लिए वी हैव टू मूव टू पीपीटी पार्ट. कल वी हैव डिस्कस दिस हैंडशेक वाला क्वेश्चन. ओके,
Now, before moving to this question, there are few points that हमें पता होने चाहिए. First of all, when we are dealing with a complete graph, ठीक है, we have a formula. Complete graph में if we have to find spanning trees, ठीक है, if we have to find number of spanning tree in a complete graph, so spanning trees लिख लो, number of spanning trees, ठीक है. If we have to find number of spanning trees in a complete graph, we have a formula, and that formula is n to the power n minus 2. ठीक है, this is the formula. But this is the formula only when we have a complete graph. What is a complete graph? Complete graph is where each node is connected to every other node. मतलब if this is a graph that with 5 vertex, so each node will be connected to every other node like this, ऐसे, राइट. सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री भी 4, डिग्री ऑफ दिस विल ऑल्सो बी 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 4. मतलब ईच वर्टेक्स इज covered to every other vertex. That is your complete graph, and for that we have a formula that number of spanning trees for complete graph is n to the power n minus 2. But now let's check for this question whether this question is having a complete graph or not. So let's say that this is your node A, this is your node B, this is your node C, and this is your node D. Degree of A is how many vertices are there? 4. So what should be the degree of all vertices? Degree of vertices should be n minus 1, that is 3. So this degree is 2, this degree is 3, this degree is 2, this degree is 3. This means it is not a complete graph. ये तो पता लग गया, ठीक है. सो कंप्लीट ग्राफ की ये पॉइंट भी है कि डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस हैज टू बी n minus 1. ठीक है, यहाँ पे n minus 1 3 आ रहा है, बट ऑल द वर्टिसेस आर नॉट हैविंग डिग्री 3. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल हैव अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज हाउ टू फाइंड स्पैनिंग ट्रीज फॉर अ नॉन कंप्लीट ग्राफ. ठीक है. सो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, सबसे पहले वी विल टेक अ ग्राफ. एग्जाम्पल हम लेते हैं, छोटे से एग्जाम्पल्स हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज योर ग्राफ. ठीक है, दिस इज योर वर्टेक्स A, this is your vertex B, this is your vertex C, this is your vertex D, and this is your vertex E. Now how many vertices we have? We have 5 vertices, and this is a non-complete graph. Okay, now what is the property of spanning tree? Property of spanning tree is I am writing all these points जिससे कि जब आप रिवाइज करो so you face no problem. Property spanning tree is no cycle should be there. Correct? No cycle should be there. अगर आप यहाँ देखो, there is this cycle. There is one cycle, this one. Correct? This is one cycle, and the other cycle, if you see, the other cycle is this one. So basically we are having 2 cycles. One is yellow and one is blue. ठीक है. Now what we have to do? Now we have to find number of spanning trees. ठीक है. Now if you see both these circuits, if I try to draw a partition between them, if I draw this partition, so I can say that both the circuits, or both circuits only, or you can say both closed loops, both circuits, that is A, B, C and C, D, E are independent. Yes. Why independent? Because this A, B, C circuit में spanning tree कब बनेगा? जब cycle नहीं होगी. मतलब I can choose this one and I can choose this one. मतलब I can take like this one. Correct? तो I can leave out this AC edge. And यहाँ पे भी I can take either this one or this one. मतलब अगर मैं ये लूँ ऐसे करके, this one, this is a spanning tree, है ना. या फिर I can take either D, CD or DE. मतलब the choices are independent of each other.
I can take any edge from ABC and I can take any edge from CDE. The choices are not coinciding with each other because the two circuits are independent. So when we have this type of case, that is your circuits or your closed loops are independent, in that case, number of spanning tree is number of edges in one circuit multiply by number of edges in circuit 2. So how many edges in circuit 1? 1, 2, 3. 3 edges. And how many edges in circuit 2? 1, 2, 3. 3. So possible spanning trees are 9 in this particular case. Okay. Now we will move back to our original question, that is this one. So what I'll do, I'll again draw this image, this one, this one, this one, this one, and then we have this one over here and this one over here. So what I'll do, again we will draw this one part. This is your first circuit, okay, and moreover अब तक सब सही चल रहा है, and this is your second circuit, this one and this one. Okay, so line will coincide, so I'll just draw it with this color, this one. Correct. Now if you can see, as you see in this particular graph, you can see that let us name these nodes A, B, C and D. So you can see that edge BD is colliding. Yes, मतलब क्या कि if I take A, if I take B, if I take C, मतलब ठीक है, I took these edges, from this I took this one, and from this I took this one, मतलब I deleted BD. Now this means that in circuit 2, if this is my circuit 1, this is my circuit 2, in circuit 2 I cannot include BD because BD is already deleted in circuit 1. Getting my point? Now these two circuits are no longer independent. The two circuits are dependent. Right. This means that I cannot delete the edge without taking in concern. मतलब अगर circuit 1 is deleting BD, circuit 1 is saying that I will not take BD as an edge. I will take AD and I will take AD. This means that the circuit 2 is basically what you can say, circuit 2 is compelled. Circuit 2 is compelled to take the edge BC and CD. If this is the case, ठीक है. अब obvious सी बात है, अगर if circuit 2 will choose BD, this will make again a circuit, and that should not happen. So what will be the case? The case will be now that second circuit is compelled to choose these मतलब either of these two. अगर obviously अगर वो ये भी देख लेगा तो पूरा फिर से cycle हो जाएगा. So it has less choices with it. Correct? So when we have this type of case, when the edges are colliding with each other, ठीक है. अब यहाँ पे कितने आपके कितने वो हैं, 1, 2, I'll just remove this edge. I'll just talk about only about the 1, 2, 3, 4. So 4 में कितनी edges में you can work, मतलब 4 अगर है तो कितनी edges आपकी चाहिए, मतलब अगर 4 vertices हैं, स्पैनिंग ट्री की तो प्रॉपर्टी सेम है, 3 ही आपकी edges होनी चाहिए. करेक्ट और नॉट? दिस प्रॉपर्टी दैट इज डिग्री ऑफ v, ये जो है अच्छा यहाँ लिखा नहीं है मैंने, आई जस्ट राइट इट ओवर हेयर. प्रॉपर्टी ऑफ स्पैनिंग ट्री ये होती है, प्रॉपर्टी ऑफ स्पैनिंग ट्री, नो साइकिल एंड नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू v माइनस 1. ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है स्पैनिंग ट्री की ही. तो इन दैट केस इफ आई हैव 4 vertices, number of edges will be 3. ठीक है. So now what will be the case, since the two circuits are dependent and the edges colliding? In this case, number of spanning trees will be edges in circuit 1 multiply by edges in circuit
2 minus number of colliding edges. So that will be 3 edges कितनी हो गई, AB AD BD 3 मल्टीप्लाई बाय BC CD BD 3 एंड कोलाइडिंग एज कितनी है 1, दैट इज 9 minus 1 दैट इज 8. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. तो ये कंसेप्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज इफ वी हैव अ नॉन कंप्लीट नॉन वेटेड ग्राफ. नॉन वेटेड ग्राफ है आपका, ऑब्वियसली वेट मेंशन नहीं है यहाँ पे. सो नॉन वेटेड ग्राफ अगर है फॉर दैट पर्टिकुलर केस, हाउ यू विल बी फाइंडिंग the spanning tree, number of spanning trees. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है. when we have a non complete graph and when we have a non weighted graph, there is no formula to find the number of spanning trees. You have to use this approach, that is you have to see कि how many circuits are being made, whether there is a in colliding edge or not, whether the circuits are independent or not. If they're independent, simply you just multiply the number of edges in both the circuits, or if there are more circuits. But if the circuits are colliding, in that case you have to use this approach. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये समझ में आ गया सबके, ठीक है. ओके, द ट्रांजिशन फंक्शन lambda in multi-tape Turing machine is defined here. So इसका आंसर 3 है, but again we'll move back to this PPT only. So if you see, this is the question, ठीक है. यहाँ पे I hope you all know कि Turing machine क्या है, but many of you must not be aware of multi-tape Turing machine, ठीक है. So if you see over here, multi-tape Turing machines have multiple tapes. नाम से समझ में आ रहा है कि मल्टी टेप मतलब कि वैसे ट्यूरिंग मशीन में वी हैव अ सिंगल टेप जिसको हम आगे पीछे वी मूव द हेड ऑन दैट टेप फॉर एंड वी राइट फॉर द ब्लैंक एंड ऑल. बट मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में वी हैव मल्टीपल टेप्स जहाँ पे ईच टेप इज एक्सेस विद अ सेपरेट हेड. मतलब हर टेप का अपना एक सेपरेट हेड है. लेट्स से दिस इज योर टेप 1, this is your tape 2 and this is your tape 3. So each tape is having a separate head and each head can move independently of the others. मतलब अगर ये head यहाँ move कर रहा है तो ये वाला head यहाँ move कर जाएगा, ये वाला head यहाँ move कर जाएगा. मतलब every head is moving independently. ठीक है, this is your basic understanding of multi-tape Turing machine. Now a multi-tape Turing machine can be formally described as 6 tuple. Q is the finite set of states. X, that is your tape alphabet. B, that is your blank symbol. Lambda और ट्रांजिशन फंक्शन, स्टेट रिलेशन ऑफ स्टेट्स एंड सिंबल्स. ठीक है, ये जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन है ये स्टेट एंड सिंबल्स का रिलेशन बताता है. Q नॉट आपकी इनिशियल स्टेट है एंड F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. नाउ व्हाट इज द रिलेशन, दैट इज योर ट्रांजिशन फंक्शन क्या है. Q मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर k. व्हाट इज k? k इज द नंबर ऑफ टेप्स. मल्टी टेप है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टेप्स कैसे डिफाइन करेंगे, वो हमने डिफाइन किया है विद द अल्फाबेट k. So q into x to the power k, x is your tape alphabet. So x to the power k will determine q, that is set of states, multiply by x into, या तो आप लेफ्ट शिफ्ट करेगा आपका टेप हेड जो है, या तो वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा या राइट शिफ्ट करेगा या वो शिफ्ट ही नहीं करेगा, होल टू दी पावर k, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टेप्स, इसीलिए हमने इस पूरे को पावर ऑफ k में रख दिया है. अगर सिर्फ हम सिंगल टेप की बात करते तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाती, k की वैल्यू वुड हैव बीन 1. इफ k की वैल्यू वुड हैव बीन 1 देन दिस मीन्स इट वुड हैव बीन, वी वर टॉकिंग अबाउट सिंगल टेप. बट यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5. सो इफ यू सी द क्वेश्चन, तो थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज, यहाँ पे इन्होंने x की जगह जो आपका फंक्शन उसको डिफाइन किया है विद दिस सिंबल. ठीक है, मतलब जो आपका ये आपका x क्या है, दिस इज योर टेप अल्फाबेट. तो यहाँ पे टेप अल्फाबेट को इन्होंने x से रिप्रेजेंट ना करके दे हैव रिप्रेजेंटेड द टेप अल्फाबेट बाय दिस सिंबल, दैट इज दिस वन. सो q इनटू आई से रो टू द पावर k विल डिटरमाइन q इनटू रो टू द पावर k मल्टीप्लाई लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नो शिफ्ट टू द पावर k. इसमें दे हैव टेकन इट एन होल, यहाँ पे पूरे होल पे लगा दिया है. यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि x टू द पावर k को अलग लिखो एंड बाकी को आप अलग लिखो. Okay, so this is the way of writing. You can use any method of writing, but the mean should not change. So इसलिए the correct answer is option number 3. Simple है, कुछ भी नहीं है.
ठीक है, तो बस ये है कि हाँ, मल्टीटेप ट्यूरिंग मशीन एवरीबडी इज नॉट अवेयर ऑफ, एवरीबडी डू नॉट स्टडी मल्टीटेप ट्यूरिंग मशीन थिंकिंग कि एग्जाम में नहीं आएगा, बट द बेसिक क्वेश्चन मल्टीटेप से उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज द ट्रांजिशन फंक्शन यूज इन मल्टीटेप ट्यूरिंग मशीन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हमने मार्क कर दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Next question is, okay, this is also a nice question. Pumping lemma. So I hope you all know what is pumping lemma. Pumping lemma is a test basically that tells us whether the language is regular or not. So it tells us whether the language is not regular. मतलब अगर हमारे पास कोई language है L and if I take this language and I want to pass it through pumping lemma, so pumping lemma मुझे ये बताएगा कि this is not a regular language. वो नेगेटिविटी को कन्फर्म कर देता है कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक है। सो फॉर पंपिंग लेमा वी हैव फ्यू प्रॉपर्टीज। So suppose what they're saying in pumping lemma for regular languages, to say a language is satisfying pumping lemma, what is the minimum length of y if you consider the string as x, y, z? ठीक है, so क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पे? सबसे पहली प्रॉपर्टी पंपिंग लेमा की ये है कि x y to the power I, y to the power I z should belong to L, ठीक है। जबकि L क्या है आपका? L is a where L is a regular language and for all I is greater than equal to 0, ठीक है। I की वैल्यू कौन सी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पंपिंग लेमा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है पंपिंग लेमा की? Second property of pumping lemma is y has to be, the value of y or the length of y has to be greater than 0. Equal to नहीं, सिर्फ greater than, ठीक है। The length of y has to be greater than 0. Then what is the third property? Third property of pumping lemma is xy altogether, length of xy should be less than equal to p. Now what is p? P is the pumping length, ठीक है। So now what is all this? So any string of length s, ठीक है, any string of length x, s in L, that is a regular language, with length p और मोर देन p कैन बी रिटन एज s इक्वल टू एक्स वाई जेड। मतलब क्या है कि x मतलब कोई भी आपकी स्ट्रिंग है एक्स वाई जेड, ठीक है। इफ दिस स्ट्रिंग इट कैन बी ऑफ लेंथ p, दैट इज पंपिंग लेंथ, और इट कैन बी ऑफ लेंथ मोर देन p, मतलब p मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, पूरी स्ट्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन बी p और मोर देन p। तो अगर वो पंपिंग लेमा को फॉलो कर रहा है तो दीज आर द प्रॉपर्टीज इट शुड फॉलो फॉर पंपिंग लेमा। What they are asking in question, minimum length of y, minimum length of y क्या होगा? देखो y has to be greater than 0, मतलब minimum length क्या होगी y की? 1, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट यू शुड नो फॉर पंपिंग लेमा, दैट इज एक्स वाई जेड। अगर कोई स्ट्रिंग है दैट वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज विद लेंथ p और मोर देन p, द थ्री प्रॉपर्टीज आर देयर दैट शुड बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्स वाई टू द पावर आई जेड शुड बिलोंग टू L for all I greater than equal to 0. I की वैल्यू greater than equal to 0 हो सकती है। Second property, the length of y, that is in x, y, z, length of y has to be greater than 0. And third property is that length of x, y altogether has to be less than equal to p. ठीक है, पंपिंग लेमा की बेसिक प्रॉपर्टीज थी, उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने। तो जिसने भी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी हुई है, that he or she would have been able to do this in no time. Okay, next question, very easy. Item generated by the production a to the power a to null, this is your null expression, ठीक है। this is basically null। तो items क्या होते हैं अगर आपको पता हो कि we have a grammar like this, s derives ab, a derives small a, b derives स्मॉल ए बी, मतलब ए बी नहीं,
इसको हम बोल सकते हैं BB, ठीक है, BB एंड B derives null. सो व्हाट वी डू, अगर आपको याद हो इन योर एल आर पार्सिंग टेबल, जब हम बात करते हैं एल आर पार्सर्स की, इन दैट केस व्हाट वी डू, वी अप्लाई अ dot or we apply an item before every production. So this is what this becomes: S derives dot AB, A derives dot A, B derives dot BB, and again B derives dot null. ऐसे ही होता है, ठीक है. सो क्या होता है इसकी प्रोडक्शंस, क्या होती है आगे की प्रोडक्शंस, हाउ द प्रोडक्शंस रूल. सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स S derives A dot B, this becomes what, A derives A dot, correct. This becomes what, this becomes B derives B dot B, this derives on reading A, this derives on reading small a, on reading small b, and this becomes what, it becomes B derives dot, that is null. So अगर A derives null है, item क्या जनरेट होगा इससे, item generate will be option number 1, that is A derives dot, मतलब string is over, null को हम mention नहीं करते हैं. So the correct answer is option number 1. ठीक है, ये आपकी LR parsers में we have studied this. So if you have any doubt in this type of question, you can visit the videos LR parsers की, वहाँ पे I have already explained this type of thing. ये आपके जो प्रोडक्शंस आ रहे हैं, ये आपके आइटम्स होते हैं, ये आपका लुक अहेड कैरी सिंबल होता है, ये डॉट, इसको हम लुक अहेड ऑपरेटर बोल सकते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दी नल NFA, तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं नल NFA है, जिसमें आपकी क्या स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2, Q3. ए सिंबल यूज किया गया है. ये ट्रांजिशन फंक्शन है आपका जो टेबल मेंशन की हुई है. Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, Q3 आपकी फाइनल स्टेट है. सो व्हाट वी विल डू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वी विल ड्रॉ अ डायग्राम. सो वी हैव Q0, we have Q1, we have Q2, and we have Q3, where Q3 is a final state and Q0 is the initial state. Now we will see कि कैसे कैसे रीड होके कहाँ कहाँ ट्रैवर्स मूव कर रहा है. सो Q0 ऑन रीडिंग नल, नल को रीड करके वो कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू Q1. ए को रीड करके कहीं नहीं जा रहा है, ओके. Q1 ऑन रीडिंग नल, अगेन इट इज गोइंग टू Q2, ठीक है. Q2 on reading null is going nowhere, but on reading A, it is at Q2 only, मतलब एक self loop हो गया A का, and is going to Q3, that is A read करके, and Q3 is going nowhere. So what they are saying, what is the minimum length of string to reach the final state? Minimum length क्या हुआ, अगर मुझे final मतलब मुझे Q0 से Q3 जाना है, so what should be the string if I want to reach from Q3 to Q0? So first it will be null dot, I'll read null, again I'll read null, and then I'll read A. मतलब कि A is the minimum length, मतलब what is the minimum length string, that is 1. क्या लेंथ हो गई 1. अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि नल भी तो एक करेक्टर है, बट सी अल्फाबेट नहीं है नल आपका, ये आपका नल NFA है. मतलब नल NFA में नल जो होता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. इफ यू वांट टू रीच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड देयर इज नो ट्रांजिशन गिवन टू यू, फॉर दैट पर्टिकुलर केस यू कैन यूज नल, बट नल इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर अल्फाबेट. अगर यहाँ पे वो मेंशन करते कि अल्फाबेट्स आर नल कॉमा ए, देन डेफिनेटली आई वुड हैव काउंटेड नल एज वेल as a part of string, but in this given question, in this given tuples, they have not mentioned anywhere ki null is a part of your language or null is a part of your given alphabet. So इसीलिए null will not be counted as a part of the string. It is a part of NFA, that is your null NFA. इसलिए the length, minimum length of the string to reach final state is simple A, that is null. null रीड करो, null is not a part of your language and null is not a part of your alphabet, so null को आप काउंट ही नहीं करोगे. so क्या हो गई मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ आ गई आपकी 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. सो ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था इसमें कि गलत है सही है, बट क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि अल्फाबेट का, इसलिए तो उन्होंने हम मेंशन किया. देखो टपल्स जो मेंशन किया उन्होंने, जो ये जो पार्ट मेंशन किया है, ये क्यों मेंशन किया उन्होंने, इसीलिए मेंशन किया जिससे कि दे कैन मेक यू अंडरस्टैंड, दे आर क्लियरली मेंशनिंग इट कि भाई दिस नल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज.
only alphabet A is the input alphabet, nothing else is the input alphabet. So when nothing else apart from A is an input alphabet, so how will you include that in your language? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. गिवन ईथरनेट एड्रेस, ये आपको ईथरनेट एड्रेस गिवन है इन बाइनरी, व्हाट इज द एड्रेस इन हेक्साडेसिमल नोटेशन. कैसे होता है हेक्साडेसिमल, क्या मतलब हुआ, हेक्साडेसिमल मीन्स 16, राइट. सो इफ आई हैव टू टेक 16 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4. दिस मीन्स 4 bits will be taken one at a time. So I can take this 4 bits, then these 4 bits. What is this 4 bits? 5, and these 4 bits are 10. What is 10 in hexadecimal? 10 is A. So first is 5A. So 5A sub में. Next I will take these 4 bits, that is 1, and then these 4 bits, that is again 1. So 8 8 ये cancel हो गया, 8 1 cancel हो गया, 1 8 cancel हो गया, 1 1. So the correct answer is option number 4. पूरा solve करने की जरूरत ही नहीं है, but still we'll do it. 8 4 2 1, that is again 5, and this again 8 4 2 1 5. Then this one is 1, and this one is 8, correct. This one is 8 4 2 1, that is 10, so it will be A, and this is 8 4 2 1, again that is A. Then this one is 0, and this one is what, this one is 15, and 15 in hexadecimal is F. So it will be 5A 1 1 5 5 1 8 A 0 F. That is option number 4. ठीक है. अगर ऑक्टल होता है हेक्साडेसिमल की जगह, ऑक्टल बेसिकली मीन्स octal is 8, that is 2 to the power 3. So हम वैसे डील करते हैं उसे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो टोकन बकेट वाले क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी तक के लिए फॉर नाउ वील डू इट टिल हियर ओनली. आई होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड इफ एनीबडी फील्स कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, सो we'll see to it. ठीक है, डोंट वरी, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है. टोकन बकेट वाला क्वेश्चन ठीक है, इथरनेट वाला क्वेश्चन है ठीक है, सीआरसी कोडिंग वाला क्वेश्चन ओके, ये आपका एआई का क्वेश्चन आ गया, ए स्टार एल्गोरिथम, ये भी आपका एआई का क्वेश्चन है. अगेन एआई, देन दिस इज अगेन एआई का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया इस बार, राइट. देन दिस इज योर बाइपर्टाइट, दिस इज योर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ थ्योरी, बुलियन आ गया ओके. मेमोरी सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी का क्वेश्चन आ गया, अगेन डी रैम एंड दिस ऑल मेमोरी स्केलिंग, दैट इज योर कंप्यूटर ग्राफिक्स, HTML आ गया. ये हमारा क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया चैलेंज वाले क्वेश्चन में, राइट. सो आई डोंट नो वेदर दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड और नॉट. अभी व्हेन आई सी द आंसर की, बिकॉज आई हैव जस्ट सीन दी क्वेश्चंस ऊपर से द ड्रॉप्ड क्वेश्चंस. आई डोंट नो पर्टिकुलर कि कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया, ठीक है. सो ये हो गया ओके. पेरेंट ये वाला था, नॉट दैट वन, ये वाला था शायद ड्रॉप जो हुआ है ना, ये वाला भी, मतलब ये भी डिस्कस किया था हमने, ये वाला भी डिस्कस किया है ओके. ये वाला भी डिस्कस किया, ये तो गलत है ही, तो ड्रॉप हुआ ही होगा ओके. ठीक है ओके. प्रोटोकॉल डिज़ाइन ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ओके. अजाइल प्रोसेस आ गया, सॉफ्टवेयर SPM ओके ओके. हाँ, तो अब क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से अलग लेवल के हैं, है ना. इस अभी तक तो क्वेश्चंस ये वाला गलत होगा, आई एम श्योर फॉर दैट वन. अभी तक तो जो क्वेश्चंस थे दे वर लाइक वेरी इजी. कोकोमो की फुल फॉर्म क्या है, या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज कौन से लेवल की लैंग्वेज है, एंड ऑल दीज वर द क्वेश्चंस. बट नाउ दे हैव गॉन इन दी डेप्थ. अब दे आर टॉकिंग अबाउट कि अब नाउ विल डील विद योर कंसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है. अभी तक तो वह लाइक ओके ऊपर चल रहा है, बट नाउ वी विल डील विद द कंसेप्चुअल नॉलेज ओके. सिली विंडो सिंड्रोम ओके. हाँ, तो दीज आर द क्वेश्चंस. सी अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए ना, आई नॉट से दैट दे वर वेरी टफ, दे वर ओके, मतलब बहुत ईजी भी थे एंड ओके वाले भी थे. बट अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, येस यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस कि दीज आर मोर कंसेप्चुअल, एंड दे एक्सपेक्ट कि आपको ये पता होने चाहिए. दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि कंसेप्चुअली भी आप पढ़ रहे हो. सो ठीक है, विद दीज क्वेश्चंस वील ट्राई टू गो मोर इन दी कंसेप्चुअल लेवल. एंड अभी हम और क्वेश्चंस जब डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस मोर पेपर्स अहेड नाउ. सो उसमें हम और भी ज़्यादा वी विल लुक इनटू कि हम क्या क्या चीज़ों में वी कैन फोकस एंड हाउ वी कैन कैरी आउट द वर्क, ठीक है.
So next video most probably I'll try to cover more questions and the questions that are important. So अभी जो हमने डिस्कस किया questions उसमें स्पैनिंग ट्री वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, पंपिंग लेमा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्योरी है एंड दे कैन आस्क यू क्वेरी थ्योरी इन वन टाइप और दी अदर. फिर जो हमने अपना बाकी तो आपके बेसिक्स क्वेश्चंस हैं. नल एन वाला क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है बट हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ नल वाला कंसेप्ट लगाओगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत आया, बट ओके नो प्रॉब्लम. ठीक है. So that's it for this session. See you all in the next session. Thank you everyone. Bye bye.